first year of the BJP government for I think Rajasthan provides a lot of opportunity, one for learning for other countries because of the interesting things that the state is doing in terms of Mayojana, the insurance scheme. It's the most well-funded scheme in India, covering about 80% of the population. So there's a lot to learn there. The free drugs initiative for a long time has been another key element that the government is doing well, and many states and governments around the world can also learn from. I think with Rising Rajasthan, this initiative that the Honorable Prime Minister and the Chief Minister are implementing in opening opportunities for investment, not only in healthcare but other areas of sustainable development, is a good one because it gives an opportunity for innovative ways for government to partner with the private sector in order to increase its reach, and that is one of the sustainable development goals. But many challenges are there. What do you feel the policy and the politeness is good Challenges in terms of what? in terms of the policies are weak. I think there are always opportunities to improve in terms of whether it's healthcare, whether it's education. I think every government is looking to improve itself, to better itself, especially as countries are moving towards the sustainable development goals. But I think looking at what the government has put in place, both at the union level with Viksit Bharat and the like, I think there is a lot that the government is trying to do in order to increase investment, but also provide opportunities for innovators, entrepreneurs, people with ideas, giving them the space to participate and engage. And so I think that will help take not only Rajasthan but the government of India further. that's such a nice thing. Padaro Hamare Desh, Gani Khamma to all. That's what Rajasthan government is saying, and this is the best way to synergize the energy from all the Rajasthanis across the globe. So if every year, as this day has been announced, 10th December, right? So every year, if that energy is coming, a lot will get evolved, right? तो आप अगर ये सोचें कि समुद्र मंथन से अगर हर साल और अमृत लोगों को मिले तो कितने लोगों को अमृत बढ़ सकता है. अमृत in the form of progress of investment, or let's say the technology what the Rajasthan can get from all the developed countries, or the ideas from the different part of the globe, as well as the synergy it will create, even social harmony and other things. कैसा लगा राजस्थान का यहाँ पे आए थे? राइजिंग राजस्थान मैं कहूँगा ये एक अच्छा सफल प्रयास है. डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट दिस इज़ वेरी गुड स्टार्ट कंसिडरिंग कि दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द BJP government, for which we also as NRI we inform many millions people about why this government should be in place under Modi ji leadership, where double engine sarkar can work. So in the first year, how Rajyavardhan ji Rathod has put the effort and has made this happen, where 32 countries delegate have come, along with definitely Bhajan Lal ji Sharma leadership, and both the Deputy CM Diya Kumari ji and Prem ji. So this is the great thing, and we see once it is going with the leadership of Modi ji, then we know Modi hai to mumkin hai, right? So that's how we are seeing this as very good starting effort for Rising Rajasthan, and I'm sure that as Rajyavardhan ji Rathod mentioned, कि let's have a team so that we can have this as Team Rajasthan, right? So that synergy will amplify the effort of Rajasthan government and Rajasthani to get
converted into fruits. बहुत आपका धन्यवाद। जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो राजस्थान की इकोनॉमी में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी, क्योंकि अभी तक तो लाल फीता सही चलती थी, लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है तो वो उसको कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल विंडो है, वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने सॉल्यूशन पाएँ। अभी जो आज मैंने पहले वाले भी प्रोग्राम अटेंड किए थे, इस वाले प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन और कैसे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे बात हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है और ये राजस्थान को बहुत आगे ले जाएगा। बड़ी चुनौतियां भी हैं। राजस्थान इतना आसान प्रदेश नहीं है, हालांकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी चुनौतियां राजस्थान में इंफ्रा को लेकर, यहाँ नीति और नीयत दोनों को लेकर हमेशा रही है। तो अब इन परिस्थितियों में आप क्या मानते हो जो सरकार पहले ही साल में ऐसा आयोजन किया? देखिए ये जो समस्याएं थी, ये जो हर्डल्स थे, वो हटा के ही सॉल्यूशन किए गए हैं और राजस्थान में इतना पोटेंशियल है। अब जो देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनता जा रहा है, मेरा ये मानना है कि राजस्थान का बहुत बड़ा रोल होगा। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर आप इमेजिनेशन की लैंग्वेज में समझा जाए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हर आदमी की ट्रिपल इनकम होगी। जैसे आप पहले देखें, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास मकान नहीं था, आज की 30% लोगों के पास ये सुविधाएं हैं, आने वाले टाइम में 80% लोगों के पास होगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ होगी। मैं खुद एक फाइनेंस बैकग्राउंड से रहा हुआ हूँ, MBA फाइनेंस हूँ,